it's only fair I would have listened to you and not do 290. Instead, we will do 291, HRAXIN Company. Calculate the expected net present value of investment project and comment on the financial acceptability. HRAXIN is appraising an investment project which has an expected life of 4 years and which has not yet, which will not be repeated. The initial investment payable at the start of the first year of operation is 5 million. The scrap value is 500, मतलब 5 lakh, जो भी अपन उसको thousands में नहीं लिखते इसलिए मैं बोला, is expected to arise at the end of 4 years. There is some uncertainty about what price can be charged for the units produced by the investment project, as this is expected to depend on the future state of economy. The following forecast of selling prices and their probabilities have has been prepared. तो ये है probability of future economic state. ठीक है, तो इसमें से अपने को अपना सेलिंग प्राइस मिल जाएगा. These selling prices are expected to be subject to annual inflation of 4% regardless of which economic state prevails in the future. Forecast of sales and productions volumes and the nominal variable cost have already been forecasted. तो ये है उनके units variables. Incremental overheads 400 per year in current price terms will arise as the result of undertaking investment project. A large proportion of these overheads relates to energy costs, which are expected to increase sharply in the future because of energy supply shortages. So overhead inflation of 10% per year is expected. Okay, ठीक है. The initial investment will attract tax allowable debt. हाँ, ये सब तो ठीक है. Nominal after tax cost of भी दिया हुआ है. ठीक है, let's start. सेलिंग प्राइस तो हमें, अच्छा तो सबसे पहले ना मैं लाइन बाय लाइन जाता हूँ और लाइन बाय लाइन सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालता जाता हूँ. ऑपरेशन सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट लगेगा. हाँ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्क्रैप वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है. ईयर द एंड ऑफ द 4 years इज 500. ना हमें वैल्यूएशन वैल्यू दी गई है.
एंड वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे डिस्काउंट पैटर्न जो होता है लिख देने चाहिए, क्योंकि ऐसे कोई इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हार्ड है। Your HRAXIN is traditionally used after nominal after tax discount rate of 11%. मुझे लगता है हमें डिस्काउंट फैक्टर्स तो कम से कम यहाँ पे लिख देनी चाहिए, बिकॉज दैट इज द मोस्ट बेसिक थिंग। वन 0.901, फिर आता है 0.812, फिर आता है 0.731, फिर आता है 659, फिर आता है 0.593। तो ये सारे आए हैं। अभी के लिए एनपीवी इतना आ रहा है, ईएनपीवी या जो भी बोल लो। तो अभी सेलिंग प्राइस के ऊपर अभी हम आ जाते हैं हमारे। व्हेन वी कम डाउन टू द सेलिंग प्राइस, हमें एक्चुअली उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज दी है, वो है प्रोबेबिलिटी की तरफ। देयर इज सम अनसर्टेनिटी अबाउट व्हाट प्राइस विल बी चार्ज फॉर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, as this is expected to depend on the future state of the economy. The following forecast of selling prices and their probabilities has been prepared. सबसे पहले तो वीक, मीडियम, फिर आता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी गई है 25, 30 एंड 35 की दी गई है। इट इज 0.3, 35%, 50%, 30 की, और 15% 35 की। ये मैंने चार्ज कर दी इसको, ये चार्ज कर दी इसको। तो अब जो मेरे को सम आएगा वो है 29 का। एक तरीके से ये एवरेज ही है, लेकिन हम लोगों को प्रोबेबिलिटी लगा के सेलिंग प्राइस लगानी है। अब हम लोग को मिल गई सेलिंग प्राइस। अब हम हमारे ढूंढेंगे सेल्स को। यहाँ से तो काफी स्मूथ है रास्ता, पहले भी स्मूथ था, बट स्टिल अगर लगा होगा तो। यूनिट्स, सेलिंग प्राइस, यहाँ से तो अभी गाइस हमारा नॉर्मल करते हैं। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेटेड सेलिंग प्राइस एंड सेल्स। सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स, inflated selling price is inflation into selling price. यूनिट्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या चार्ज करवाई थी, मुझे वो चेक करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन यहाँ पे दी गई थी 4%, regardless of which economic state it prevails in. तो 1.04, मेरे सेल्स मिल जाते हैं। I'll just drag them down till here. ये भी हो गया। फिर आता है प्रोडक्शन, हाँ, नॉमिनल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, ये इन थाउजेंड, अच्छा ये मुझे सामने से दी गई है। ओके, 2385,000, देन 4200, 123, 7080, 123, 5730, 123।
Fixed cost, incremental overheads of 400 per year in current price terms will arise as a result of undertaking the investment project. A large proportion of these overheads relating to energy costs, which are expected to increase sharply in the future because of energy supply shortages. So overhead inflation of 10% is expected. ठीक है. Fixed cost. तो ये मेरा 10% से मेरा फिक्स्ड कॉस्ट भी हो गया. एक्चुअली दिस आर इंक्रीमेंटल ओवरहेड, मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं बोल सकता. इंक्रीमेंटल overheads, but the fact is that these are incremental overheads. ठीक है. Will these be incremental like every year? I don't know. बाद बाद में देखते हैं. इंक्रीमेंटल बोला तो क्या पहले साल में 4,40,000, फिर नेक्स्ट ईयर में 44,000, उसके बाद फिर से 44,000, फिर से 44, क्या वो होते जाएगा या नहीं? बस मेरे को वो डाउट है, वो बाद में चेक कर लेंगे. The initial investment will attract tax allowable debt on straight line basis over the next 4 years, 4-year project life. The rate of corporation tax is 30%, and the tax liabilities are paid in the year in which they arise. Tax rate is 30%. ये हाँ, ये मेरा टैक्स अलाइबल डेप हो गया. मैंने सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस यहाँ पे चार्ज किया, क्योंकि हमें एक स्क्रैप वैल्यू दी गई है, तो मैं मैंने सबसे पहले यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू से माइनस किया. मुझे एक वैल्यू आई 4,50,000 डिवाइड बाय 4 ईयर्स. देन उस चीज को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करते बैठा, एंड वी गेट 337500. ठीक है, ये हमारा टैक्स अलाइबल डेप है मेरे हिसाब से. हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 337500. फिलहाल के लिए मुझे ये आंसर आता है.
एक बार फॉर वन लास्ट टाइम हमें क्या काम करेंगे, हम एक बार इसको फिर से एक बार लिख देंगे फॉर्मूला को। प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स प्लस टैक्स अलाउएबल डेट प्लस स्क्रैप वैल्यू माइनस टैक्सेस, देन वी विल जस्ट ड्रैग दिस थिंग टिल हियर। तो इस चीज का एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं रहा। Let's see then. Let's check the answer. 291. 3809. 3806,315. इट्स बिकॉज हमने एब्सोल्यूट फिगर्स में किया तो वो राउंडिंग ऑफ में उतना बड़ा डिफरेंस आ गया होगा, इज व्हाट आई थिंक। क्योंकि देखो इन्होंने यहाँ पे ओवरहेड्स भी हमने जो डाउट में था वो हमने एकदम बिल्कुल सही से किया है। टैक्स तो ऑब्वियसली सही होगा। डेप में 338 लिया उन्होंने, हमने 3375 लिया है। हमने बिल्कुल एब्सोल्यूट फिगर्स में किया है इस चीज को, इसलिए हमारा चेंज हो सकता है आंसर। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट एनपीवी फिलहाल के लिए। तो जरा वेट करते हैं। इसका थियोरी करना बाकी है ना, ये थियोरी अपन उड़ा देते हैं। क्रिटिकली discuss is sensitive analysis will assist RAXIN in assessing the risk of the investment project. Sensitivity analysis analyzes each project variable separately, project risk variable separately. Higher the sensitivity analysis, क्या बोलते हैं? Higher the percentage or probability, lesser the sensitive will be, and lower the probability or percentage, the higher the sensitivity will be. Or sensitivity analysis, actually sensitivity analysis does not consider interdependency or से बोलूंगा इस चीज को, connection of project variables. Stimulation considers that. और क्या बोल सकते हैं? बाकी तो सेंसिटिविटी का में बोल सकते हैं कि एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वेरिएबल, उससे सेंसिटिविटी एनालिसिस ढूंढे जाते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार remarks. Sensitivity analysis assesses the extent to which the net present value of an investment project responds to the change in the project variable. Two methods are commonly used. One method determines the percentage change in the project variable that helps in making project variable, which results in a negative NPV, while the other method determines percentage change in the NPV caused by the which results from fixed percentage changes or caused by the percentage changes. For example, 5% in each project variable in turn. वो ठीक है. Whichever method is used, the key or critical project variables are identified as those to which the NPV is most sensitive. For example, those where the smallest percentage changes results in the negative NPV. Sensitivity analysis is therefore concerned with calculating relative changes in project variables. While discussing risk in the context of investment appraisal, it is important to note that unlike uncertainty, risk can be quantified and measured. The probabilities of occurrence of particular future outcomes can be assessed, for example, and needs to evaluate and used to evaluate the volatility of future cash flows. For example, by calculating the standard deviation, the probabilities of the future economic states in the assessment of investment project of RAXIN are an example of probability analysis.
and these probabilities can lead to assessment of project risk. तो probability की तरफ थोड़ा सा लेके गए इस चीज को sensitivity analysis से ज्यादा. Probability analysis is usually studied in investment appraisal. Sorry, sensitivity analysis is usually studied in investment appraisal in relation to understanding how the risk can be incorporated in the investment appraisal process. While sensitivity analysis can indicate critical variables of an investment project. However, sensitivity analysis does not give any indication of the probability of a change in any critical variable. See? While sensitivity analysis can indicate the critical variables of the investment project, however, sensitivity analysis does not give any indication of the probability of change in any critical variable. मतलब वो आइडेंटिफाई करता है कि वो क्रिटिकल वेरिएबल कौन सा है जिसके वजह से चेंज आया है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि ये प्रोजेक्ट वेरिएबल का चेंज अगले साल में क्या होगा, या ये प्रोजेक्ट वेरिएबल का चेंज पिछले साल में उसने बताया नहीं होगा कि ये कितने से बढ़ेगा. सेलिंग प्राइस में बी अ क्रिटिकल वेरिएबल फॉर एग्जांपल, बट सेंसिटिविटी analysis is not able to say whether a change in selling price is likely to occur in investment appraisal of the investment project in the appraisal of investment project of HRAXIN company. The probabilities of different selling prices arising with related economic states have come from probability analysis, not from sensitivity analysis. हाँ, ये वाले जो वो बोल रहे हैं, ये इतना 35%, 50%, 15%. Sensitivity analysis will not therefore directly assist HRAXIN in assessing the risk of investment project. However, it does provide useful information which helps management to gain deeper understanding of the investment project and which focuses management attention on aspects of investment project where problems may arise. ये वाला जो है ना, अपन इधर एक पॉइंट लिख देंगे आफ्टर वी रीड द थर्ड क्वेश्चन, लेकिन तब तक तुझे कुछ पूछना है या कुछ रीड करना है? एक बार वापस उस पे जा. You know, describe the process that would be undertaken to decide whether to lease or buy an asset for long-term investment. नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं लीज और बाय के लिए, तो वो सब भी लिख सकते हैं ना कि the lease owner has the ownership of the asset. हाँ हाँ हाँ, वो सब तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो सब लिखेंगे ही. बेसिक विद द एनपीवी निकालते हैं, बट इन दिस केस द एंटायर एनपीवी और द ऑल द there won't be any cash inflows, there will only be cash outflows. That is, there would be a negative NPV, and the least negative NPV should be selected. इसको 5 मार्क तक का कैसे बनाए? फिर वो invest in the bank, if you will borrow to purchase the machine, then the interest is tax deductible. हाँ, अगर हमने बैंक से लिया हुआ है तो फिर हम इंटरेस्ट कैश फ्लो में तो नहीं आता ना, वो मेंटेनेंस कॉस्ट और पेमेंट्स के बारे में बोल सकते हैं, लीज पेमेंट्स या टैक्स डिडक्टेबल वगैरह वगैरह. देखना पड़ेगा यार ये. When considering whether to lease or buy an asset, because the cash flow of leasing and buying generally lasts for a life of the project, discounted cash flow techniques should be used. This will mean that the time value of money is taken into account. The cash flows are all expressed in present value terms, and the two options will directly be compared. The cash flows related to leasing
and those two buying should be compared, discounted at the post-tax cost of borrowing. This makes the assumption that the asset is either being leased or purchased with use of financing. Hence, the discount rate used for both options is the borrowing cost. Okay, the cash flows of the lease that will be relevant are the lease payments themselves and the tax savings that these lease payments will lead to. This is on the assumption that the business is making profits overall to benefit from the reduced tax bill seen Mm. from offsetting the lease payments against profits. The cash flow of the purchase option will be those of the purchase itself, any scrap value, and the tax savings from any tax allowable debt available. Interest cash flows on any borrowing used to purchase will not be included. देख ना तुझे बोला था ना interest वो नहीं आएगा, will not be Mm. included as these are accounted for within the cost of capital used for discounting. पर वो नहीं आएगा, ये भी पॉइंट हम डालेंगे. Mm. Cash flows that are common to both options can be ignored as it's the differences between the options that will determine which is chosen. Once the two sets of discounted cash flows have been calculated, they are compared and the lowest option is chosen. Nice. फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ दिखा इसका ये पॉइंट को आंसर का. हाँ, फैमिली मनी You know? आगे.